So let us begin with the chanting of Omkar. Sairam. So we are discussing about company accounts and we discuss about share capital. Okay. So we have discussed the different types of share capital, that is authorized capital, issued capital, subscribed capital, and paid up capital. And in this we discussed two parts: subscribed and fully paid up capital, and subscribed but not fully paid up capital. Okay. Now let us go ahead. Okay. So this much theory we have discussed. We have also discussed the types of shares, equity shares and preference shares. That all we have discussed. Now let us come to the issue of shares. Okay, we have discussed types of share capital and we have also discussed types of shares. So a company in India is allowed to issue two types of shares: equity shares and preference shares. Is it clear, Sairam? Yes, sir. Now, so there are different methods of issue of shares. One is called IPO, EIPO or IPO. है ना? IPO, that is initial public offer. Now this is called issue of shares to public. So whenever a company has to issue shares for public, company has to issue a prospectus that we have already discussed. What is the prospectus? This prospectus is addressed to the public. It may be in the form of an advertisement, circular or notice, and purpose of this prospectus is to invite subscription from public. Is by way of prospectus, company invites the public to subscribe for its securities, that means shares or debentures. So, are you understanding, Sairam? Yes, sir. Yes, sir. So, there are different methods of issue of shares that we will discuss in BS also. So here there may be private placement or preferential allotment, but in case of private placement or preferential allotment, company does not need to issue a prospectus. In case of private placement, company submits a statement in lieu of prospectus to the office of registrar, because without inviting the public, company shares are purchased by few select group of persons. So that is the private placement. In that case, company does not issue prospectus, but to complete the formalities, company submits a document in the office of registrar of companies that is called statement in lieu of prospectus, statement in place of prospectus, that is submitted. So when company is going to issue the shares to the public, company has to issue a prospectus. So when companies issue shares for public, shares may be issued for cash and for other than cash. So I have to write on this board so you can understand it better.
So here is I am writing issue of shares to public. Or we can say public issue of shares. Public issue of shares. Okay. So whether it is a equity share or preference share, there is no difference in the process. Process is same. Whatever type of shares company is issuing, either it is issuing equity share or preference shares. So I am writing here issue of shares. Okay, this is the topic, issue of shares. So a company may issue shares for cash and for consideration other than cash. So shares may be issued for cash and for consideration other than cash. So what is the meaning of this other than cash here? Shares may be issued to vendors. Issue of shares to vendors of assets. Okay, sometimes company purchase assets and in place of making payment in cash or by check, company can give the shares to the vendors. So that is called issue of shares to the vendors. Issue of shares as collateral securities. नहीं, वो तो डिवेंचर है. Issue of shares to the vendors है इसमें और दूसरा इसमें और क्या इसमें sweat equity shares. Okay. Other than cash में है एक तो वे वेंडर्स के लिए इशू कर सकती है और इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स. इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स and underwriters. Promoters are the persons who form the company. Last year पढ़ा था हमने promotion. तो जो कंपनी बनाने में हेल्प करते हैं, they are called promoters. So for their services, in place of making payment in cash or by check, company can issue shares to them. Similarly, underwriters are those who help the company in selling the shares. So as their commission, company can issue shares to them. So there are two categories. Is it clear? Sairam? Sairam? Yes, sir. So this is Yes, sir. section 53. No, section 50 discount का होता. So shares may be issued for cash and for other than cash. Now see, other than cash तो हम बाद में पढ़ेंगे. हमारा मेन कंसर्न है, उसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं है other than cash में. इसका जो मेन पार्ट है, सब्सटेंशियल पार्ट है, वो है कैश. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. So when company issues shares for cash, there are two methods. Number one, lump sum payment, है ना? Company takes the whole value of share in one installment. Lump sum payment. 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी ने पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम में ले लिया. और दूसरा होता है हमारा इन इंस्टॉलमेंट्स. वैल्यू ऑफ शेयर इज टेकन in installments. So there are two methods.
In case of issue of shares for cash, the full value of his share can be taken in one installment, or the value of share can be taken in installments, different installments. Okay. तो लमसम पेमेंट की बात हम बाद में करेंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा. हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला पार्ट जो है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश and amount is taken in installments. Okay, so now try to understand. Issue of shares for cash. अभी लमसम पेमेंट को भूल जाइए. When company issues shares for cash, the value of share can be taken by the company maximum in 5 installments. Maximum in 5 installments or 5 stages. ठीक है. Which are the 5 installments? Number 1, application. Number 2, allotment. And 3 calls, maximum 3 calls. First call, second call, and third call. Third and final call. So this is the choice of the company, whether it want to take full amount of the share along with the application. If company asks the shareholder to send the full value of share along with the application, that is called lump sum payment. Is it clear, Sairam? Yes, sir. Yes, sir. So there is share of ₹100 and company writes in a prospectus that those who want to purchase share send ₹100 per share along with their application. It means company is taking the full value of share in lump sum or in one installment. Or second method may be what? Second option is what? Out of this 100, company say please send ₹20 at the time of application, ₹20 at the time of allotment, ₹10 at the time of first call, ठीक है, ₹25 at the time of second call, ₹25 at the time of third call. ये कितना हो गया? 100 हो गया. साई राम. Yes, sir. Yes, sir. This is the other way of taking money from the shareholders. Okay, so this is the process by which company can take the money from shareholders. Either it can take lump sum at the time of application, full value of share can be asked to pay, or this amount can be taken in different installments, but maximum stages are this 5. Company has option, it can use only 2 stages, application and allotment. वो बोल सकते हैं कि ₹50 हमको एप्लीकेशन पे दे दो, ₹50 allotment पे दे दो, काम खत्म. हो सकता है वो 3 का यूज करे, एप्लीकेशन, allotment एंड फर्स्ट कॉल, इतने में ले सकती है. हो सकता है कोई कंपनी 4 का यूज करे, एप्लीकेशन, allotment, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बट मैक्सिमम जो चांसेस है कंपनी के पास वो 5 है, एप्लीकेशन, allotment and maximum 3 calls. Okay. So now first let us understand the provisions of Companies Act about this application, allotment and calls, because this is a very important part of theory that will definitely be asked in the examination also. So what are the provisions of Companies Act regarding application, allotment and calls? Then we will go for the accounting for this different stages of shares. Okay. So first let us discuss application. So when company issues a prospectus, in the prospectus company mentions the total number of shares it is going to issue, the price at which company is going to issue the shares, and mode of payment. Mode of payment is this: how much amount is to be sent by the applicant along with the application, how much amount company will take at the time of allotment, and what will be the bifurcation of amount at the time of calls. That is mentioned by company in its prospectus. So the first stage when company takes money from the applicants, that is called application money.
So what is the application money? The amount payable along with the application is called application money. है ना? The amount payable along with the application is called application money. This is the compulsory amount which a person has to send if he wants to purchase the shares. Without this application money, his application will be rejected by the company. Company will not accept his application. So the money payable along with the application or at the time of application is called application money. Okay. When company receives application money, okay, it is transferred to company's account. It remains credited in the company's account and it does not become the part of capital of the company. अभी ये कंपनी की कैपिटल का पार्ट नहीं है. क्यों नहीं है वो बाद में बताता हूँ आपको भी. So what are the provisions of Companies Act regarding application money? ये कहता है according to section 39 minimum application money should be 5% of face value. Okay. ये कंपनी एक्ट का प्रोविजन है. मैंने आपको एक दिन बताया था कि there are two bodies, one is the Companies Act, other is the SEBI. So Companies Act says that what is the application money? It should not be the minimum subscription application money should be 5% of nominal value or face value. This you have to understand. यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5% of face value. ठीक है. और दूसरा प्रोविजन तो किसका प्रोविजन है? कंपनीज एक्ट का. कंपनीज एक्ट बोलता है कि एप्लीकेशन मनी मस्ट नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू. 5% से कम नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू की. और जो सेबी की गाइडलाइन है, सेबी कहता है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस. 25% ऑफ द इशू प्राइस. बता रहा हूं आपको दोनों का डिफरेंस क्या है. ये बता सकता है क्या डिफरेंस इसका? आप में से किसी को पता है क्या? साईराम, साईराम कोई है क्या क्लास में? साईराम, एक बार बाद. माय क्वेश्चन इज दैट दिस देयर आर टू बॉडीज. अब दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी बताया मैंने, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. तो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट regarding application money. Provisions of Companies Act regarding application money. So section 39(2), section 39 subsection 2 of Companies Act says that application money should be 5% of minimum है. Minimum application money should be 5% of nominal or face value of share. इसका मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. इज इट क्लियर साईराम? सो कंपनीज एक्ट सेज दैट द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ nominal value or face value of the share. But SEBI says that application money should not be less than 25% of issue price. 25% of issue price. ये SEBI गाइडलाइन बोलती है.
ओके, तो इसमें लिखा है, देखो क्या है, आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ, मैं दोनों पढ़ देता हूँ, इसमें बड़ा क्लियर किया है इसने। कंपनीज एक्ट सेक्शन 39.2 कहता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। समझ में आया आपको? तो कंपनीज एक्ट ने दो चीजें बताई कि या तो ये 5% होना चाहिए कम से कम, या फिर जितना सेबी सजेस्ट करे उतना होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सही राम? Yes, sir. Yes, sir. सेबी ने क्या सजेस्ट Sir. किया? इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। तो प्रैक्टिकल में जो कंपनियां इशू कर रही है क्या फॉलो कर रही होंगी? व्हाट दे आर सपोज टू फॉलो नाउ? वो 5% को फॉलो करेंगे या 25% को फॉलो करेंगे? 25%. Yes, 25%. Company Act itself has given the right to SEBI to change this percentage. SEBI has the right to change this percentage. तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ध्यान रखना, तो आप लिखेंगे 5% ऑफ फेस वैल्यू। अब ये भी बताऊंगा, दोनों इनमें भी चक्कर है, फेस वैल्यू अलग होता है और इशू प्राइस अलग होता है, तो दैट आई विल डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस, है ना। So if it question asks that what is the minimum application money according to Companies Act, तो क्या लिखोगे आप? 5% of face value of share। वो 5% of issue price नहीं है, 5% of face value or nominal value। And if question asks that what is the minimum application money according to SEBI, that is 25% of issue price। Is it clear? सही राम? Yes, sir. ठीक है, अब देखो समझो, पहले मैं थोड़ा आराम से चलूंगा, कंपनियों के इसमें लीगल प्रोविजंस बहुत है, वो बड़ा क्लियरिटी होना चाहिए इसमें, नहीं बाद में आप लोग गलत करते हो आंसर्स को अपने। इसको मिटा दो, इतने वाले को मिटा दूं मैं आपको, ये समझ में आ गया सबको? सही राम? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब इसको समझते हैं, पहले चेक करिए प्राइस वाला, फेस वैल्यू का और इशू प्राइस का चक्कर समझते हैं पहले। नया ही ले लेता हूँ, चलो इससे छोड़ो, इसको मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। तीन ही ले लिया मैंने, चलो यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू, इसका एक और नाम है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर। ओरिजिनल और प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ए शेयर, जितने का वो शेयर है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उसके ऊपर छवि है शेयर के ऊपर, प्रिंटेड है ना, प्रिंटेड ओवर द शेयर, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे सपोज करो ₹100, एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹100, तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹100 का है। वो शेयर बेसिस जैसे नोट में छपा रहता है ना, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ऐसे ही शेयर के ऊपर रहता है, तो उसकी फेस वैल्यू जो होती है वो उसके ऊपर प्रिंटेड है, तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इज इट क्लियर? साई राम? साई राम? Yes, sir. Up now, company has the right or choice to issue a share number 1 at par, है ना? Company has choice to issue a share number 1 at par and number 2 at premium। पहले एट डिस्काउंट भी था, वो अब डिलीट कर दिया, अभी 2013 के कंपनीज एक्ट में इसको हटा दिया है। नाउ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक कैटेगरी होती है शेयर्स की, स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो केवल डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई शेयर्स कंपनियां डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। सो नाउ कंपनीज आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, एट पार मींस इफ ए शेयर इज इशूड एट ए प्राइस इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, है ना? क्या होता है? इफ ए शेयर इज इशूड
at a price equal to its face value. It is called issued at par. Share issued at par. क्या बोलेंगे इसको? Share issued at par. Are you understanding? If a share is issued at a price equal to its face value, जितने का शेयर है उतने में इशू किया. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये शेयर 100 रुपए का है और कंपनी 100 रुपए में बेचती है, इसको इशू करती है, तो क्या बोलेंगे उसको? Issued at par. In this condition, face value and issue price are same. इस कंडीशन में दोनों सेम है. Face value and issue price are same. Is it clear? सही राम. हाँ भाई रिप्लाई करो, नहीं तो समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ. मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? समझ में आया कि नहीं आया आपको? Yes, sir. ठीक है. अब दूसरी बात लेते हैं प्रीमियम. प्रीमियम में क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको. यहाँ जैसे यहाँ लिखा है फेस वैल्यू लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा इशू प्राइस. ठीक है. अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज है और इशू प्राइस भी 100 रुपीज है. तो टर्म क्या बोलेंगे इसको? हम टर्म यूज करेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार. At par. Par means तो equal. Par means equal. Equal to what? That means share is issued equal to the, means at the same price as it is its face value. So face value and issue price are same. Then it is called issue of share at par. Is it clear now? Yes. This is option Yes, number sir. 1. Second option. Face value is 100. Company's issue price is ₹150. This is called option number 2, at a premium. At a premium. Here, face value is less, issue price is more. So, if a share is issued at a price higher than the face value, higher than or more than, higher than the face value, it is called issue of share at premium. Now any confusion? Sairam? No, sir. So company can issue the shares at par or at a premium. Companies now cannot issue the shares at a discount. जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने बताया था ना आपको, सेक्शन 39 कहाँ गया वो? सेक्शन 39 8.19 पेज नंबर. तो एप्लीकेशन मनी का सेक्शन 39. तो उससे पहले था ना एक वो, तो कौन सा सेक्शन का? सेक्शन 53. हाँ, सेक्शन 53 हैज प्रोहिबिटेड द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. तो सेक्शन 53 ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट बिकॉज इट इज ए कैपिटल लॉस. सो नाउ इट इज बैंड, इट कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट. So now we will discuss only two conditions: issue of shares at par, issue of shares at premium. Now come to the question we are discussing. What we are discussing? Application money. Application money. Companies Act says that minimum 5% of face value. SEBI says 25% of issue price. ये है ना, ये पढ़ा था ना? Yes, sir. इस कंडीशन में अब सेबी ने गाइडलाइन इशू कर दी, तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन ओवरलैप हो गया, रिलेवेंट हो गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची. अब इसको कोई फॉलो नहीं करेगा. किसको फॉलो करेंगे हम? सेबी गाइडलाइन को. तो 25% किसका निकालेंगे इस कंडीशन में? पार पे निकालेंगे तो दोनों का सेम है, चाहे फेस वैल्यू का निकालो चाहे इशू प्राइस, बोथ आर सेम. तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस कंडीशन में, बोथ आर सेम, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस. बट इन दिस कंडीशन, if the shares are issued at premium,
then we have to take 25% of 150. इसका 25% निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू को नहीं लेंगे. This is issue price. So SEBI says minimum application money must be 25% of issue price. This is issue price. So we have to take 25% of this minimum. Maximum कितना भी ले सकते हैं. Maximum में कोई restriction है ही नहीं कंपनी सेक्ट में. Maximum तो मैंने बताया पूरा पैसा कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन के टाइम ले सकती है, पूरा पैसा चाहे अलॉटमेंट के टाइम ले सकती है, जब चाहे तब ले सकती है, बट दैट इज द मिनिमम अमाउंट दैट इज prescribed in the Companies Act. So minimum 25% of issue price must be taken along with the application money as per the SEBI guidelines. According to Companies Act, it is 5% of the face value of shares. So now this is clear to all of you. Face value and issue price. Face value means the nominal value or print value or original value of the share. Issue price means the price at which company is offering the share to the public. Company is issuing the share to the public, and company is free to issue the share either at par or at a premium. How much premium company can take? There is no restriction on premium. Maybe a share of ₹10 is issued by company for ₹1,000. That is possible. If a company is a reputed company and there is a huge demand for its shares, so a share having face value of ₹10 can be issued for ₹1,000. So there is no restriction on premium. That depends on the demand of the shares, choice of the investors, whether they are ready to purchase the share at that amount of premium or not. So company can charge any amount as a premium. No restriction on amount of premium. So shares can be issued either at par or at a premium. Clear? So this is called issue price. So this is the provision about application. तो अभी और थोड़ा पढ़ते हैं application का क्या दिया देखिए. Application money received is retained in share application account. ये भी आ सकता है कि शेयर एप्लीकेशन को जो पैसा आएगा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जैसे ही कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी लोग एप्लीकेशन भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजने के साथ साथ दे विल आल्सो सेंड द एप्लीकेशन मनी. So this it is compulsory for every company to open a bank account, and whatever money is received from investors along with the application, that will remain deposited in the share application account. इस अकाउंट में रहेगी, ध्यान रखना इस अकाउंट को. It will remain deposited in the share application account until the allotment is made. कब तक रखना है? जब तक शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ तब तक. जब शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, this share application money will be transferred to share capital account. It means that until the allotment is made, share application money is not the part of company's share capital. It is not the part of company's share capital because आपको बताया था मैंने कंडीशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, अभी हमने स्टार्टिंग में बेसिक टर्म पढ़ रहे थे. सही राम? Do you remember? Yes, sir. So condition is that if company does not receive amount equal to minimum subscription, that is according to SEBI 90% of issue price. अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने 90% of the issue price. In that case, company cannot make the allotment, and this application money will be returned to the applicants. कितने टाइम में वापस करना पड़ेंगे मुझे आगे प्रोविजंस में. This application money will be returned to the applicants. जब तक allotment नहीं हो जाता तब तक ये रिस्क में रहती है, पता नहीं कंपनी के allotment होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा, और अगर कंपनी ने इसका यूज कर लिया तो वापस कैसे करेगी. इसलिए क्या करते हैं इसको, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मनी इज केप्ट इन द share application account in the bank account, and it is not the part of the capital of the company. So company cannot use this money until the shares are allotted. Is it clear? So पहली चीज क्या हुई, minimum application money according to Companies Act it is 5% of face value of share. According to SEBI guideline it is 25% of issue price of share. Number 2, application money received that along with the application is kept in a separate account called share application account in a bank account. It is not the part of the company's capital, and it will be transferred to share capital, or it will become part of share capital only after the allotment of shares. Okay. अब
दूसरा टर्म है हमारा अलॉटमेंट। बताया ना आपको अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है समझिए पहले। आपको मैंने बताया था, आपको एक बार कही अलॉटमेंट, किसी को अगर याद हो तो क्या होता है अलॉटमेंट। ये हटाऊंगा कि इतना समझ में आ गया आप लोग को। सही राम, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना। आपने कई लोग तो पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने तरीके से समझाने की। आपने क्या समझाया वो आपको पता होगा। अगर मैं कहीं गलत बताऊं तो बता देना कि आपने ठीक नहीं बताया। ठीक है सही राम, आगे चलें। Yes, sir. ओके, अब आता है अलॉटमेंट के ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। To understand this term allotment of shares, we have to understand this word contract. कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजनेस लॉ का पार्ट है, कॉमर्शियल लॉ जो होता है हमारा उसका पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया भी था आपको, पार्टनरशिप जब पढ़ा रहा था तब बताया था, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में। सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक होता है प्रपोजल और दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। इट मेक्स द एग्रीमेंट, इससे मिलके बनता है एग्रीमेंट। एंड इफ एग्रीमेंट इज लीगल वैलिड होगा, वैलिड एग्रीमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन ए प्रपोजल, वन पार्टी गिव्स ए प्रपोजल टू द अदर पार्टी। जैसे एक्स कहता है कि आई वांट टू सेल माय हॉर्स फॉर ₹50,000। एक्स ने प्रपोजल दिया कि आई वांट टू सेल माय हॉर्स फॉर ₹50,000 एंड सिद्धार्थ एक्सेप्ट दिस प्रपोजल and Siddharth says that I am ready to buy your horse for ₹50,000. So acceptance means if the proposal is accepted in the same sense, in the same manner, that is called acceptance. तो प्रपोजल था कि मैं अपना घोड़ा, अनुराग ने बोला कि अपना घोड़ा मैं 50,000 रुपये बेचना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने बोला कि मैं तुम्हारा घोड़ा 50,000 रुपये में खरीद रहा हूँ। तो प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और लीगल क्या हुआ, क्योंकि दोनों पार्टी 18 साल से ऊपर के, दोनों 18 ईयर्स से अबव है, साउंड माइंड के दोनों पार्टीज। ठीक है, वैलिड कंसीडरेशन है, पैसा मिल रहा है, कोई थ्रेट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उन्होंने जो प्रपोजल किया एक्सेप्टेंस हो गया, तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने का इफेक्ट क्या होगा कि नाउ अनुराग इज बाउंड टू सेल द हॉर्स टू सिद्धार्थ। अब अनुराग को घोड़ा सिद्धार्थ को बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसने प्रपोजल दिया था, इसकी एक्सेप्टेंस हो गई। समझ में आया आपको। सही राम। Yes, sir. अब आप देखिए एक और दूसरा एग्जांपल। एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसने वैकेंसी निकाली मैनेजर की, है ना, 10 पोस्ट थी मैनेजर की। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, इसमें लिखा क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस होना चाहिए बंदे को। ठीक है, 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन लिखी। इसका मतलब क्या हो गया, XYZ लिमिटेड ने क्या दे दिया, प्रपोजल। ये हो गया ना। सही राम, XYZ लिमिटेड की तरफ से क्या प्रपोजल हो गए। अब यहाँ पर 100 लोग मिल गए इनको, 100% है, जिन्होंने सारी कंडीशन पूरी करते हैं जो उन्होंने लिखी है। दे आर MBA, दे आर मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस। सबने अपनी एप्लीकेशन भेजी इनके पास। तो मतलब क्या हो गया कि दीज ऑल पीपल हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। प्रपोजल दिया था कंपनी ने, उसको क्या कर लिया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि कंपनी हैज टू गिव जॉब टू ऑल 100 पीपल। सारे लोग को अब नौकरी देनी पड़ेगी कंपनी को। तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे कंपनी ने प्रपोजल दिया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब कंपनी नौकरी नहीं दे रही, कंपनी फंस जाएगी। कंपनी के पास जॉब कितनी है, सही राम, जॉब्स कितनी है, 10, और लोग कितने आ गए, 100। तो क्या कंपनी 100 लोग को जॉब दे सकती है? नहीं है, नो सर। तो बचेगी कैसे, लीगल प्रोसीडिंग में फंस जाएगी कंपनी। ऐसे कंपनी, दूसरा एग्जांपल ले लो, ये ABC लिमिटेड है, इसने एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस निकाला फॉर इशूइंग 1000 शेयर्स, 100 रुपीज ईच। 1000 शेयर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला, 100 रुपए का शेयर है।
अब जितनी कंडीशन थी वो सारे लोगों ने पूरी करते हुए 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेज दी। तो ये प्रपोजल हो गया और ये एक्सेप्टेंस हो गई। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी को सारे 50,000 लोगों को शेयर देने पड़ेंगे, 50,000 शेयर देने पड़ेंगे। और शेयर कितने कंपनी के पास? 1,000। तो कंपनी 50,000 शेयर कैसे दे सकती है? समझ में आ रहा है आपको? सही राम? यस सर। तो इस टेक्निकल इशू सर को एक बार फिर से बता दीजिए जो अभी आपने लास्ट में बोला। लास्ट में जो बताया दोबारा बताता हूँ। यहाँ देखो, ये है, ये MNC लिमिटेड है, सपोज करो। दिस कंपनी इशूड ए प्रोस्पेक्टस फॉर इशू ऑफ 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। एंड कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। तो कंपनी ने जितनी कंडीशन लगाई थी कि कंपनी का 50 रुपए भेजना हर एक आदमी को एप्लीकेशन के साथ में, सबने 50 रुपए भेज दिए कंपनी के पास में। तो अगर हम इसको मानते हैं प्रपोजल, तो ये क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। यही हो ना? इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को सारे लोगों को शेयर देना पड़ेंगे, लेकिन कंपनी के पास शेयर तो कितने? 1,000, और शेयर खरीदने वाले कितने हैं? 50,000 शेयर। तो कंपनी शेयर दे सकती है कि सबको? नो सर। सेम इश्यू आ गया, जैसे उसमें No, sir. 10 जॉब थी और एप्लीकेशन आ गई 100 लोग से, तो कंपनी 100 लोग को जॉब दे सकती है क्या? क्योंकि जॉब No, तो sir. करती है। No, sir. तो फिर एक टेक्निकल इशू फंसेगा ना, क्योंकि आपने प्रपोजल दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट्स लीगल एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट है, नाउ यू हैव टू फॉलो इट। नहीं तो आप लीगल कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, क्या सॉल्यूशन निकाला वो समझो। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस अलॉटमेंट। सो टू अवॉइड दिस लीगल कॉन्फ्लिक्ट, it is suggested or it is now assumed or it is prescribed by law that issue of prospectus or advertisement for job, this all है ना, इस तरह की जितनी चीजें होती हैं, is not a proposal। इसका स्टेटस चेंज कर दिया, it's not a proposal, it is a offer to make a proposal। इसका लीगल स्टेटस क्या कर दिया? इट इज ऑफर टू मेक प्रपोजल। मतलब समझ में आया आपको? हमने आपको जो भेजा एडवर्टाइजमेंट दिया वो प्रपोजल नहीं है, वो ऑफर टू मेक प्रपोजल है। नाउ यू हैव टू मेक ए प्रपोजल। इफ यू वांट टू परचेज शेयर, यू हैव टू सेंड द एप्लीकेशन। तो योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या? प्रपोजल है। जॉब एप्लीकेशन का स्टेटस क्या हो गया? प्रपोजल। दिस इज प्रपोजल। नाउ प्रपोजल इज फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम कंपनी साइड। तो कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उसका स्टेटस हो गया ऑफर टू मेक ए प्रपोजल, ठीक है। वो प्रपोजल नहीं है। तो प्रपोजल कहाँ आ गया? जो एप्लीकेशन आप भेज रहे हैं वो प्रपोजल है। आप किसके हाथ में है? उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? साईराम, साईराम। आप कंपनी के हाथ में है। कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करती है तो कहती है आप सूटेबल हो, जॉब दे देगी। जॉब दे देगी, इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और नहीं देती तो क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया। सेम फॉर शेयर्स। कंपनी अगर आपको शेयर अलॉट करती है तो क्या हो गया? योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। इफ शेयर्स आर नॉट इशूड, इट मींस योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड। नाउ बॉल इज इन कंपनीज कोर्ट। अब एक पावर कंपनी के पास है, तो उसका स्टेटस जो होता है वो होता है ऑफर टू मेक ए प्रपोजल। अब नाउ समझो। अभी मैंने जो आपको बताया था कि जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बिकॉज until the shares are allotted, that person's status is a applicant। जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है और जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो एप्लीकेंट है, और जॉब उसको मिल गई, अपॉइंटमेंट हुई तो क्या बन जाएगा? फिर वो एम्प्लॉई। ऐसे ही जब तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तब तक आप क्या है? एप्लीकेंट। सो एज सून एज, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ अलॉटमेंट, इम्पैक्ट ऑफ अलॉटमेंट। इम्पैक्ट ऑफ अलॉटमेंट इज व्हाट? एज सून एज द शेयर्स आर अलॉटेड, the applicant becomes the shareholder। उसका स्टेटस चेंज हो गया, applicant become the shareholder and share application money will be transferred to share capital account and it will be the part of share capital। that is the effect of share allotment। तो जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती है तब तक जिसने अप्लाई किया उसका स्टेटस क्या? एप्लीकेंट का है। he is not a shareholder of the company
As soon as the shares are allotted, there is agreement between company and applicant. तब एक legal contract create होता है, and because of that, the applicant's status is changed, and he becomes the shareholder, and the application money received from these people will be transferred to share capital account, and that will become part of the capital of the money, irrespective of the fact whether full amount of share is taken or not. तो 100 रुपए का शेयर है, चाहे उसमें 20 रुपए लियो, but that person will be the shareholder. चाहे पूरा पैसा लिया हो, चाहे 20 रुपए लियो, that will not make a difference. Is it clear? साईराम? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये अब तो टाइम ही खत्म हो रहा है, बंद करता हूँ इस क्लास को मैं, पर अगली क्लास में बात करेंगे दूसरी. So this is allotment. Okay, so now I am stopping presenting, so that we can join the next class after some time. So we discussed two things today: application and allotment. ठीक है? अभी इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है वो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से. अंजलि मिश्रा, अंशिता साहू, चले गए लोग, चलो ठीक है, जाने दो, काम करेंगे. साईराम, यू कैन लीव नाउ, टाइम हो गया बस, अगली क्लास में करेंगे अटेंडेंस. सर. हाँ जी बोलो. सर एक क्वेश्चन था सर. हाँ बोलो. सर, does company can increase the price of face value? फेस वैल्यू को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फेस वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, वो तो फिर कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, दोबारा से पूरी कैपिटल फिक्स करेंगे. बताया ना आपको. फेस वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? शेयर क्या होता है? शेयर इज द पार्ट ऑफ और यूनिट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल. जैसे आपकी 10 लाख कैपिटल थी, आपने 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर बनाए, 10 रुपए का एक बनाया, तो पूरी कैपिटल तो कवर हो गई आपको, उसमें हो गया ना. फिर कंपनी को फेस वैल्यू चेंज करना तो तब कर सकते हैं जब शेयर्स आर फुली पेड अप. जब सारे शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे तब उसको स्टॉक बोलते हैं. देन स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती, उसको चेंज कर सकती है कंपनी, तब तक नहीं कर सकती है. सर कभी भी चेंज कर सकती है? नहीं, जब फुली पेड अप हो जाएंगे, सारे शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे, फुली पेड अप होंगे तब उनकी फेस वैल्यू, पर उसकी मतलब नहीं बचा कुछ फेस वैल्यू का. देन कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स स्टॉक एंड स्टॉक्स वैल्यू कैन बी चेंज, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सर जैसे अभी सर शेयर की प्राइस 10 रुपए है और अगले साल मैं दोबारा इशू करने जाता हूँ तो मैं उसे 20 रुपए की फेस वैल्यू में करता हूँ. फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है. कंपनी को इशू प्राइस चेंज करेगी ना, कंपनी को फेस वैल्यू चेंज करके क्या मिलना उसको? या तो फिर कैपिटलाइजेशन करे दोबारा, कंपनी रिकैपिटलाइजेशन होगा कंपनी का, दोबारा सब पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेगी, रिकैपिटलाइज होगी तब करेगी. अदरवाइज फेस वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, मार्केट प्राइस को फिक्स कर सकती है जितने बेचना है. ओके सर. कंपनी को फर्क नहीं पड़ा ना. फेस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाती है, मार्केट प्राइस पे काम होता है. हम लोग जो खरीदते हैं वो इशू प्राइस पे खरीदते हैं, और बाद में जब शेयर मार्केट में आ गया, सेकेंडरी मार्केट में, तो मार्केट प्राइस पे चलता है, वो जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको उस पे चलेगा. सर बस एक और क्वेश्चन था सर. हाँ. Does share price of each company on Sensex shows face value? नो फेस वैल्यू ऑन सेंसेक्स. फेस वैल्यू किसी का नहीं, सबका मार्केट वैल्यू से होता है. सेंसेक्स में सबका मार्केट वैल्यू आएगा, किसी का भी फेस वैल्यू नहीं आता. तो सर डिफरेंट क्या होता है सर मार्केट वैल्यू में? मार्केट वैल्यू क्या होता है? कीमत है. जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए है शेयर की, ठीक है, हो सकता है बाजार में 200 रुपए का बिक रहा हो वो शेयर, है ना. हो सकता है 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में बिक रहा हो मार्केट में, तो मार्केट प्राइस मे बी मोर देन फेस वैल्यू और लेस देन फेस वैल्यू. सर आपने वो रिलायंस का एग्जांपल दिया था ना सर. हाँ, 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 4800 रुपए के आसपास उसका भी. नहीं वो रिलायंस नेचुरल गैस. अरे ना, हाँ, तो उसका तो फेस वैल्यू से भी नीचे बिक रहा है वो, तभी उसका फेस वैल्यू तो नहीं, उसका इशू प्राइस था, मैंने जो बताया 225 इशू प्राइस था, फेस वैल्यू 10 रुपए उसका शेयर था. फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन उसका इशू प्राइस रखा था कंपनी ने 200, प्रीमियम पे इशू किया था उसको, लेकिन मार्केट प्राइस इशू प्राइस से बहुत नीचे चल रहा है उसका. मार्केट प्राइस अभी वही है उसका 70-80 रुपीज. इशू प्राइस तो कंपनी ने, इशू प्राइस तो एक बार के लिए होता है केवल, जब इशू किया तब, फिर उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं इशू प्राइस का. अगर कंपनी सर वो इतने लॉस में चल रही है फिर दोबारा रीइश्यू कर ही नहीं पाएंगे सर, क्योंकि कंपनी मार्केट कभी वैल्यू रीइश्यू नहीं कर सकती. एक शेयर गया कंपनी के पास से, उसको कभी रीइश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर. अगर कंपनी ने कुछ शेयर्स फॉरफीट किए तभी रीइश्यू करेगी, अदरवाइज कंपनी के पास कोई राइट नहीं है. वो फिर मार्केट में गया, कंपनी के पास नहीं है,
इन्वेस्टर के पास है वो चाहेगा तो बेचेगा, जिसको चाहना हो खरीदना हो वो खरीदेगा। कंपनी के पास वो शेयर वापस नहीं आएगा कभी भी, जब तक नहीं कंपनी सर, जब नया इशू करने जाएगी अपने नए नए शेयर इशू करेगी तो नई वैल्यू फिक्स कर सकती है। नया इशू अलग हो गया, नई इशू नई नई वैल्यू फिक्स, नया लॉट हो जाएगा वो, न्यू कैटेगरी ऑफ शेयर्स क्रिएट कर सकती है। पहले वाले शेयर 10 रुपए के थे, अब वाले शेयर 100 रुपए के हो सकते हैं, दैट कैन बी डन। मतलब नए इशू पे हम अपनी फेस वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, नई नई बेस वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं इसमें। वो अलग लॉट हो गया है ना, उसको कर सकते हैं। जो शेयर एक बार इशू हो गया उसकी नहीं कर सकती, वो चला गया कंपनी के हाथ से, कंपनी के पास तो आएगा नहीं लॉट, थैंक यू सर। है ना। ठीक है, ओके।